Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Exercise 1, question number 1. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. एक कंडीशन आपको गिवन है जिसमें कॉस्ट ऑफ नोटबुक कॉस्ट ऑफ पेन के ट्वाइस है. इस सिचुएशन को लेकर आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर्म करनी है. लेट अस सी हाउ. सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसके बेसिस पे हम सपोज कर लेंगे दैट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, दो चीज़ें गिवन है, नोटबुक एंड पेन, उन दोनों की कॉस्ट गिवन है. सो लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक बी x रुपीज़ एंड सिमिलरली सेकेंड चीज़ जो हमें गिवन है वो है कॉस्ट ऑफ पेन. सो द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू रुपीज़ बाई x एंड y. ये दो वेरिएबल्स हमने सपोज कर लिए क्योंकि हमें दो वेरिएबल्स में इस इक्वेशन को लिखना था. अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन और वी कैन से अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, जो भी हमें कंडीशन गिवन है उसमें कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ये हमें कंडीशन गिवन है. सो x इज इक्वल टू 2y which is equal to x minus 2y equal to 0. So this is the required linear equation in two variable according to the given condition.